Good evening, all of you. Good evening. Voice audible समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. काली कोपन जाइଥିଲା हमरो ते कोड पळेला एमती हेगला एटा कोन करे पडियो रे आसे लास्ट कोडा पड़े ऑनलाइन टा मत कहलो देखो टिल तुमको मु कहू छी देयर इज एन सेग्रीगेशन इंडिया रा जोटा की टिल ड्रेनेज पैटर्न बंद इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड हाईली कॉम्प्लिकेटेड माने जदी तुम ड्रेनेज पैटर्न माने रिवर्स सिस्टम क्वेश्चन जदी सबुटु डिफिकल्ट माने फिजियोग्राफी ये नहीं कि बहुत लंबा एटा ड्रेनेज पैटर्न डाला माने सिक्स डरिवर नहीं हैला आई एम हियर टू एज योर प्रेशर तो पर्टिकुलरली जदी मु कहबी कि ड्रेनेज पैटर्न रे कोन हुए ड्रेनेज पैटर्न माने रिवर्स सिस्टम सेटा ना सबुटु कॉम्प्लिकेटेड को आ जाए बिकॉज़ ऑफ क्वेश्चंस मते यदि पचारियो सर आपण ज्योग्राफी रे को जगह रे टिक अटकी जानती माने ये रे मु अटके ड्रेनेज पैटर्न कारण क्वेश्चंस इतने वेराइटी रे पचार चंदी काहे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस दे लिंक टू यूपीएससी कथा कहूछ बर्तमान तमर जेतु से हेगला तो आई विल ऑन द सेम लाइन तो से माने कोन करचंदी पर्टिकुलरली रिवर्स सिस्टम रे सपोज केरला रे गोटे रिवर हैला सपोज दे आर few days back there was an news in of Vembanad lake where there are some rivers there are few lakes those who are drained to the Vembanad lake तो से माने they are basically जेमते मु कहली पेरियार सपोज वेम्बनाद लेक रे दीटा ड्रेन होचन पेरियार आउ पंबा तो एमान को भीतर कोआ जाउची कि दोस रिवर कोर्स व्हिच आर ड्रेन टू द वेम्बनाद लेक दे आर बेसिकली फ्लड प्रोन्स केलर जोटा तो क्वेश्चन से एंगल ले पचारचंदी तमे सिविल सर्विस तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट दे शुड आस्क इन द सेंस कि ए रिवरटा ओडिसा रे को रिवर होउची it is of course even for this and class 1 exam high profile exam we should not expect these things this is the very basics जोटा कि स्कूल लेवल तुमको इंटीग्रेटाइज कोन करिवे पर्टिकुलर जेमति पर ओडिसा रे मु कहली महानदी रो ट्रिब्यूटरीज पचारिवे महानदी रो ट्रिब्यूटरीज माने केते प्रकार ट्रिब्यूटरीज देयर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को पटु बार राइट बैंक को पटु बार दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दे आर आस्किंग इन द ड्रेनेज पैटर्न so also the other rivers also हला टिल ड्रेनेज पर्यंत इंडिया कॉम्प्लिकेटेड देन धीरे धीरे तमर रहइबो हला काहे कि हमर मेन ऑब्जेक्टिव हला प्रीलिम्स क्लियर करिवो प्रीलिम्स रे ही इंडिया रे वेरी डाइसी क्वेश्चन पकुचन आ वर्तमान तो तमे निजे देखतो कि थिंग्स आर ऑल आर स्टेटमेंट बेस्ड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हे जिंस हबनी बोली हां सो लेट अस प्रिपेयर फॉर द टफ और माने प्रिपरेशन लेवल टफ लेवल हवा कथा क्वेश्चंस किछि मैटर हो आवर कॉन्फिडेंस लेवल विल हेल्प अस टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस राइट अच्छा वर्तमान आसरे आ पचारनी पळे आस टाइम हेगले आस पळे आस वर्तमान मु कहबी काली हमें पढितले टिल तोर कन्याकुमारी पॉइंट वर्तमान मु इना कहबी हला मु इना कहबी रिगार्डिंग स्टेट्स एंड यूटीज अगेन वेरी क्वेश्चंस ठीक अछि how many states are there and how many UTs are there 28 correct hela 28 and 8 UTs lekha there are 28 states as of now there are 28 states and 8 union territories hela 28 states and 8 UTs
ठीक है जी 28 states and 8 UTs. गोटे क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन लिखो arrange the UTs of India, arrange the UTs, Union Territories of India, area wise from largest to smallest. No reference of your atlas, no reference. करो मन देख करो निज कंट्री विषय रे एक क्लास रे एकदम कंसंट्रेशन ने करो भाव कि जेमति तमे इट इज योर माने यू आर वेरी वाइटल यू आर क्रॉसिंग थ्रू फॉर योर प्रीलिम्स आई एम टेलिंग द लेक्चर्स आर वेरी वाइटल से आंसर भाबिक कर जा भूल ठीक हो करो किस में मूव जस्ट कर मन देख कर ए एक्टिव से हेलो छु झाड़ू टाइम ठिया कर रखे मतलब विरक्त लगे मत मो रखा है The same honesty I should expect from the online guys also. Question को लिखुची arrange जोड़ा रखा है arrange the UTs of India with respect to their area from largest to smallest. पांच नंबर कौन तो ठीक अच्छी तोरा चंडीगढ़ चंडीगढ़ पर दिल्ली यस 1 2 3 1 2 3 करके लिखुनी एगुड़ा कहीं एमती लिखुछु हैं मत बोले जहाँ कहला बेलू उल्टा कुछ मत बुलाऊछु खाली ड्यू कहला बेलू डमन कहलु तो भाबुछु मैं जानि परनी आइए हैं एगुड़ा सब करी के आइछु हमें ना बोल 1 2 करी सजा 1 2 3 बंद ठीक अछि बस बस till 3 बंद ओके then no yes अभी yes quick एते टाइम नेले अपन इंडिया रे एमती बी इंडिया रे क्लास रे प्रॉपर बेसे असाइनमेंट देबी फट फट करिवो जिन सबडा टिके पढ़ी के आसवा पड़िवो देयर इज नो कैजुअल till 3 okay rest गड़बड़ सुनील सल्ला तोरा कुछ जा चलना क्या बोला तोरा पुणी नो रियली किछु तो मो वॉइस से बळिया मो दिल्ली जेतले निये मो बिना माइक रे मो ऑडिटोरियम में कहि दे ऑडिटोरियम हॉल माने ये हुए बास इज वेरी लाउड मैत्री अंशु कोनाटा बोलछ रे कोनाटा बोलछ प्रगति देखो सॉरी जेएनके जेएनके दिस इज सेम रे एई पंद ठीक अछि टिल हां तापर कॉलेज बोल अछि नो फिश मार्केट कल टू बाड़ी आनी
टर्मिनोलॉजी लो पचार जो बढ़िया रेडी करिकी क्रिएटिव रो क्वेश्चन को केमती कल श्रावणी कल तो वन टू करिक लिखछु ने इति कोन तो ठीक रेस्ट्रॉन्ग सुनील कल करो है नहीं तुमरा नाटक होचे ने सिद्धांत श्रीकांत सिद्धांत सिद्धांत 3 on the tick. Anyone else have completed? No worries, nothing. Just to check yourself that how much you all are knowing about your own country. मु तो एपंदा डायग्राम प्रैक्टिस करनी से तलक मु देखिबी केते माने खुशी रो गर्वर सह तम डायग्राम गुडा देखिबी. This is the minimum requirement to study your India. You should have a spirit to study India, otherwise सब तो ऑनलाइन नहीं, isn't it? What is your own perceptions about our own country to know about the things, right? इतनी दूसरे पागे ये कोन तो मोटा धीरे धीरे मैंने चक्कुली पिठा वाला भूल है गलाइन आ सर तो आउट नहीं ठीक है जब देखली पा प्रथम तीनटा करलु सेकंड टाइम नहीं कर और कहीं उन तो माने तो ना एटा कार मुनि एली रे तो नंबर 1 आफ्टर क्रिएशन लिखिनिया के लिखिले रेटी मधुस्मिता शर्मिष्ठा कोन के लद्दाख जेएंड के अंडमान निकोबार दादरा नगर हवेली नो 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 मैक्सिमम गलत प्रथम लिखो नंबर 1 लिखो रैंक वाइज केमती देबो नंबर 1 लद्दाख नंबर 2 जेएंड के नंबर 3 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नंबर 4 चंडीगढ़ yes दिल्ली सर किछि नंबर 5 एनसीटी माने किए न्यू दिल्ली एनसीटी एनसीटी माने नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैला 6 रे डीएन एंड डीडी एंड डीएनएच हैला दामन ड्यू एंड दादर नगर हवेली 7th पुडुचेरी माने पांडिचेरी 8th लक्षद्वीप लक्षद्वीप वाला स्मॉलेस्ट इंडिया को पढ़िला सब क्वेश्चन फॉर्मेट रे पढ़ो गधंग वाले खाली जोगुडा मारी की पढ़ी गले किछि लाभ नै किछि मु कहले इंडिया क्वेश्चन तुम टच कर परिबनी जदि तमे एई बळे क्रिएटिव न पढुचो आई एम गारंटेड तमे क्वेश्चन कर परिबनी इंडिया दिल्ली रे भी सेम हालत तांको पचले भी मूर्ख केही पढु ना तमे एठी भी सेम जिंस पढ पचलला माने खाली ओवरऑल खालतन हवा गोटे आ तो पढिचो सब मार्केट पे हवा सब हवा ट्रू नॉलेज इज नाही खाली गप्प गुडाय अच्छा मोर नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्लियर समस्त हम देखिली मैक्सिमम एई पर्यंत सब ठीक आप छोटे स्टोरी को जाइल नॉट डिटेक्ट खाली सुनिनिया हला हला गोटे दिन जे लिखिया चाहे लिखि परियो मते को ए जो जिंस गुडा हला चेंजेस ए ग्रेट चेंजेस मु कोची दैट इज अ डिवाइडिंग लाइन व्हेन आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हला after article 370 कथा जदि हम करबे the article 370 was involved in India पचात्र ऑलरेडी क्वेश्चन पचाई सरचे एटा प्रीलिम्स रे ओडो को एग्जाम में देखुते यूपीएससी क्लियर जो रेबे इन्वोक केबे हेतला अगस्त वेरी गुड 5th अगस्त 2019 एटा हेतला कोन proposed stage हेतला proposal parliament रे हेतला when it was implemented 31st October 2019 हला 31st October 2019 हला रे implement हेतला देखो the article 370
the article 370 माने एटा तम रीजनल पार्ट रे आसी हला इंडियन रीजनल रे the article 370 was proposed the article 370 was proposed I'm class रे अछि I'll call you back sorry ठीक है हला कौन लिखला article 370 was proposed in parliament on 5th August 2019 and जब it is invoked not repeal हला and it was implemented Sir, read again. article 370 हला was proposed ठीक अछि proposed और invoked जब लगे proposed ठीक अछि एक्चुअली कोन हितला जो कोर्ट पचर छि रिपील जोटा कांग्रेस गवर्नमेंट करि थिला हला मु सेटा कहबी तुमको आगे लिखि दियो स्टेटमेंट ती गुडा जिंस मु पूरा डिस्टर्ब हो अछि I would ask the online student please keep yourself mute otherwise the whole process is getting disturbed India मंडको एमिति पढ़ा it is highly intellectual तमे भाबनी कि खाली स्लाइड देखै देला पढि देला ऑनलाइन में किछि सेंति नाही it is completely implemented तमने जदि एई भो म्यूट एमसी गपी ऑनलाइन रे हम कोन करबी Janana, please mute. काइंडली आपण ऑल म्यूट कर दियंतु So article 370 hela etiki comma and it was implemented on 31st October 2019 now it is audible सुनुछि समस्तंको Yes, sir. हला ठीक अछि त मु कहली कोन article 370 article 370 was proposed on 5th August 2019 ठीक अछि in both the houses in parliament simple in parliament comma and it was implemented hela on tapale ko on 31st October 2019 it was implemented throughout the territory of India hela a माने कोन throughout the territory of India या माने हला कि particular see law is enforceable there are two things law गोटे जो थाए जोटा कि दीटा जिंस law the difference between law and act law means it is may binding or not binding
but enforceable means it is bound, it is binding with punishment. That means each and every state corners, particularly throughout the territory of India, it is an act enforceable. ठीक है? अच्छा कौन है द्वारा particularly आ द्वारा कौन है particularly आगुरी जो थिला अंडमान निकोबर was the largest in territory वर्तमान एटा को तीन पोजीशन पड़े से नंबर 1 है लद्दाख सेकंड है then जम्मू कश्मीर then अंडमान एंड निकोबर आइलैंड तो माने खाली रखो जोड़ा देखो जो मु खाली देखो जो गोटे जिंस if you look at the map here this is also the same thing लद्दाख तमे निजे देखो जम्मू कश्मीर आफ्टर कौन है Article 370 पर Jammu Kashmir was no more a state, rather it was bifurcated into two union territories, Ladakh and J&K. Ladakh was covered the maximum areas, including the controversial Gilgit-Baltistan and Siachen areas, particularly. I'm just shortly going to the very purpose of government. Why did all these things? Because of that, what pastly the record has committed that one. Okay. बहुत माने ऑन करिकी पूरा गपुची मु कहली मु रिक्वेस्ट के तांगर निजे भितरे कंटीन्यूअस गोटे पिला हॉर्न मारछु गपुची और पण ठीक है देखियो चेंज होय मानते ठीक अछि सो इट वाज implemented so it was the background कौन हेतला इंडिया अच्छा नाउ कम डाउन कि कौन हेतला कांग्रेस गवर्नमेंट रे तमे देखि तो आर्टिकल 370 बहुत जन के जन हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेड द आर्टिकल 370 Very good. So majority of the class you all saw the Article 370, right? So Article 370 तो मैं जानी थी background कि it was there was a mistake in during the Congress means I mean the after independence जोड़ा कि हमें देखे ले. So after that these particular things which was we feel that this will not happen in the sovereign country like India or it is completely a biased structure in the secularism particularly. This was appealed that one. Since you all are the your aspirants or bureaucratic would be bureaucrat, you should know the things what was happened. It was actually it was not manifested in our constitution. It should not be like this one. Somehow it has been manipulated in either way. And you saw that one the papers are kept in the library of Jammu and Kashmir. Whatever things. So to correct the same thing or to enshrine the particular language of our constitutions or preamble that has to be corrected on 2019. This was the background. Now come down here. मन रखो एबडा सब जदी कहउची लैंग्वेज एबडा सब लेखिला बडे सब इंप्लीमेंट करिवो मन द फ्लो कहि चलची हला माइंड रे पूरा पूरा जिंस तो वर्तमान कोन हला सो एटी लेखो लक्षद्वीप बीइंग द स्मॉलेस्ट कैपिटल आगोडी जिंस बोलियो लेखो आगे लक्षद्वीप बिलिंग इज द smallest union territory among all. Very good, Rajesh. Rajesh pura de dijiye area of 125-535 km followed by the Ladakh and Anbar. अच्छा मु लेक्चर कहबी पुनी आगुडी जिंस छाडले हला नोट लिखि चला जहा जहा कहउची लिखि चला मो नोट रे किछि जिंस नाही जो करंट जिंस बडा मु तुम कहउची नोट लिख now the story comes to DD and DNH मत को वर्तमान earlier Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli was separated हला वर्तमान स्टेज रे सफर गोटे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन असला वर्तमान गोटे वेरी रिसेंट जिंस बडा पटकना पकेबे वर्तमान इट इज नाउ दे बोथ आर मर्ज्ड Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli कहि दिली सर डिस्टर्ब होतला चलिए So what happened particularly कि गवर्नमेंट why they took the steps DD and DNH ऊपर मुझे तो कहबी कि दादर Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli was particularly previously यार बैकग्राउंड कौन again why the government took such decision to merge Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli why technically answer दियो गप्पो नहीं why
गवर्नमेंट कोन पे डिसीजन नेला और केबे हेतला प्रथम आसो केबे हेतला व्हेन इट वाज देयर इज इट बिफोर JNK और आफ्टर JNK आफ्टर JNK देन व्हेन 26 January 2020 or 21 20 it is before covid माने covid जो स्टार्ट हुआ पूर्व हैला अच्छा नाउ कम डाउन टू से कौन पे गवर्नमेंट डिसीजन नेला एंते टेक्निकली मु सब डाकिबी डी लाइन में मु डाकिबी इन लाइन में कौन पे गवर्नमेंट वाई सर took such decision to merge DD and DNH okay one yes how government took such decision to merge DD and DNH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कला सब स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आसा तो कौन टा लिखिबो तमे कौन टा को चूज करियो अनिल अंशु yes administrative easier administration right Maitri very good है one of the administrative सब ठीक तीन जन कहला मेन जिंस होला कौन administrative complexities and financial burden this is an extravagant government thought to be that it was extravagant for in budget allocations in both the by making so by merging this one the cost can be minimized and so also the administrative complexity to minimize also for example तमे जि देखिबो DD and DNH रे केवल गोटी MP सीट अछि माने constituency as for the constituency सेतिक भी तमर budget allocation हबो unnecessary एते देबा कोन दरकार हैला so this was the background shortly लेखो है on 26 January Monday lekha India pura hala on 26 January 2020 on 26 January 2020 Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli got merged on 26 January 2020 Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli get merged ठीक है जी The following are the reason of merger. The following are the reason for merger. Number one. The following are the reason for merger. Number one. To lessen the administrative complexities. To lessen the administrative complexities. Second, to reduce the financial burden. To reduce the financial burden. हैला ठीक है जी कोई लास्ट कोड पॉइंट लेखा जोटा मु टिके भूलिए लेखा Daman remains the headquarter of DD and DNH. Daman remains the headquarter. Hello? Daman remains the headquarter. DN and DDH. Daman Bartwan Koti. It is located in Maharashtra, not Gujarat. Hello? काली मु कहितली ड्यू टा हला तमर 80 हला तमे देखो निजे खोली की भी ड्यू जदी देखिबो बेटर हो तमे पॉलिटिकल महाराष्ट्र खोलो दिस वन बेटर एटा खोलो दिस पेज Daman Diu दिस वन एटी देखो देखो जा Daman ना इंडिया पॉलिटिकल देखो ड्यूटा कोटी ड्यूटा बर्तमान तुमको पचारिबो सपोज इंडिया रे केमती क्रिएटिव क्वेश्चन पचारिबो देखो टिके मोड को देखा मु धीरे धीरे तमन को एबे धीरे धीरे काली स्टार्ट हला मु धीरे धीरे तमन को देखिबो धीरे धीरे नै की मेरियाना ट्रेंच पकरे छाड़ दे अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द इंडिया क्वेश्चन तुमको गारंटी दोछ इंडिया देखिबा को बहुत सुंदर किंतु एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड और देखि क्वेश्चन हमरे की पड़ियो पूरा
बुझो कि नहीं मु तुम केमती क्वेश्चन पचाली देख दीटा जिनस सब भाव आम पढ़ी क्वेश्चन केमती हो पार केमती अगर पचारे कौन हो पार जमी ये कौन देखी तुम ये साइड लिखिपर कि दमन इज इन महाराष्ट्र वेयर is located near to Kathiawara Peninsula पचारिबो कच्छ और काठियावाड़ अरे गुजरात पाखरे के अछि का पाखरे काठियावाड़ इट्स नॉट कच्छ लेखा एबडा सब where Diu is located near to Kathiawara Peninsula और अंडरलाइन करो एमिति भाबे नोट मु देकी जाउची हला नरे गोटे जिन तुम बैक सरला गोटे जिन तुम इंडिया कंप्लीट पर तुमर मेनली तुम जमी देखियो कि सातटा देछन तुम खाली एनसीईआरटी रेफरेंस छोड़ा अलग किसी नेबा दरकार नहीं सो प्रैक्टिकल है ना ठीक अछि सम वर्तमान एटा एटा जो अछि एटी लेखा हेडिंग दियो एनी डाउट India's frontier लेखा फिजियोग्राफी स्टार्ट करिवे ना India's frontier frontier माने कौन बुझछो रे नेबरिंग कंट्रीज हला फ्रंटियर माने मु तुम कहबी हला पुन लेख क्वेश्चन देखो लेख लेख क्वेश्चन लेख पुन प्रीलिम्स रिलेटेड हला मु कौन कहली फ्रंटियर्स माने नेबरिंग कंट्रीज हला क्वेश्चन लेख मेंशन question number 1 mention the land frontiers or territorial frontiers that connected to India, that surrounding India. Second question, mention the oceanic frontiers with India. करो दीटा क्वेश्चन भाभी चिंती के लेख जहां जानिच पढ़ी वर्ल्ड रे इंडिया सब जिन इम्प्लीमेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा मेंशन द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया माने दैट कनेक्टेड टू इंडिया सोनू कैन यू राइट इट क्वेश्चन लिखि दियो जो माने आस्ते हम देखिबे चलना है देख केतरा आसी लैंड फ्रंटियर्स मु देखिबे ठीक अछि लिखला 7 हैला चेक करनियो कौन कौन मु कहूची सपोज क्वेश्चन तुमको पचलला अरेंज देम इन सपोज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सपोज एंटी पचलला इंडिया एंटी पचलला एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से अनुसार तुम सब सपोज मु तुमको कहूची एंटी क्लॉकवाइज आई विल चूज नाउ एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज की आसीबो प्रथमे मु धरछु कोटू अफगानिस्तान धरछु अफगानिस्तान चाइना हला चाइना परे ओ सॉरी हां अफगानिस्तान परे पाकिस्तान परे म्यांमार नहीं पाकिस्तान परे तमरा आसीबो बांग्लादेश हला सॉरी दिस इज बांग्लादेश then
म्यांमार हैला म्यांमार परे चाइना परे भूटान नेपाल दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेम जिनस उल्टा नबो क्लॉकवाइज हो हैला अफगानिस्तान पाकिस्तान म्यांमार बांग्लादेश म्यांमार चाइना भूटान नेपाल ठीक अच्छे मुझे तुमको ए टाइप क्वेश्चन कहली बी रेडी दैट आफ्टर क्लास तुम जो टाइप क्वेश्चन करियो तो माइंड रे इंपैक्ट पड़ला इट विल हेल्प यू आउट टू रिजॉल्व अदर क्वेश्चंस इन द सेम मैनर isn't it अरे ओशियनिक रे कोन हो सेमती हां एटा गला देन ओशियनिक रे कोन हो श्रीलंका और मालदीव्स बस पेड़ा कस करना माडा कस होल्ड ऑन एज पर वर्तमान मु तुम कहबी मु काहे की एटा लिखली दिस इज करेक्ट इट इज ऑब्वियस वर्तमान मालदीव्स पर मु लिखिबी रियूनियन मॉरिशस सीचेल्स है ना ठीक अच्छे ये तीन टा को मुझे मत पचार कहीं की रीजन इज दैट इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन इंडिया प्लेज ए बिग बी रोल हला इंक्लूडिंग मैं कहबी ए तीन टा परे वर्तमान जदी कहबो वर्तमान सिनेरियो माडागास्कर को भी तमे नहीं पारिबा काहे की दैट इज व्हाट in our budget last budget our finance minister madam Sitaraman has allocated different funds to this particular oceanic countries देखो उल्लेख दिमाग तळ एई मास तळ देखो हेची कि नहीं मन समस्त हेची अरे हेची कि नहीं मन को समस्त बजेट क्लास काहे की that means it is in geopolitics of Indian oceans रे मन आसु चंती look at the map again mu dekho this is Indian ocean Indian the pivotal point peak point so India is agar pura cover ho कि नहीं एमान India plays a very vital role in Indian ocean realm हैला तो सब जिनसर भाबो कि एमान को जो दिया होची हैला ता भीतर पुनी आमे देलु काकू मालदीव्स एते जिनस कल तथा 1000 कोटी ने केते देलु श्रीलंका ता भीतर मुंह फेलेला मते कहीं कम मिलला तांक कहीं अधिक मिलला बड़ा कोटी मान दैट इज एन रोल and this is also a message to other superpowers that yes we are also gaining strength over this अरे वर्तमान इलेक्शन टाइम पैसा उडुची उडुनी पूरा गां रे वर्तमान समस्त दिया होची मन दस फॉर एग्जांपल देनी आंदपुर कथा में आंदपुर रे वर्तमान घर पिछा सम आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम घर पिछा पर मेंबर पिछा जणे दोची 4000 आ जणे 2000 आ जणे डेली मटन भात चिकन भात प्लस इंक्लूडिंग अदर बिवरेजेस आई डू नॉट टेल तुम माने बहुत इंटेलिजेंट जान दो कोन बिवरेज को दिया होची लोक जे भिड़ा भिड़ी जोटी खाइले कले आमे ताको दबु हला एग्जैक्टली द सेम थिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे भी चले ओके लेखो केमती अच्छो कि क्या को मिलु एमती बिवरेज लाज करिया कोन जी बिवरेज मिलनी किछ नै कोन मिलि तते थम्स अप मिलि तको नाइ म आमु टिके दियो थम्स अप पाइछ तमे मु तो आज गोटे जगह जाउथली गोटे काम रे स्टेडियम जाउथली 12 बजे काम रे फेली आ फेला मते लागला मु बेहोश हे जिवि इत्ते खरा गोटे जगह दही सब जगह जल छत्र केंद्र से माने गला बेलकु से माने बाइक रो धोई जान आस 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 भाईना पियो आस बुझला मुगले आई मार दोना कोन रुआ लेको India along with some of its neighboring countries India along with its neighboring countries constitute Indian subcontinent
इंडोनेशिया इज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया करेन्सी टू भी तार भल करेन्सी है माने पर्टिकुलर इंडिया टू भी तार भल ये व्हाई नॉट इंडोनेशिया सेमती मु कहबी व्हाई नॉट फिलिपाइंस है इट इज आवर हमर इंटरनेशनल साउथ ईस्ट पसिफिक हमर ए जो कंट्री गुडा कहले माने साउथ एशिया रिलम रे आछन माने इंडियन ओशियन रिलम रे इंडियन ओशियन जदी कहबो सेटा साउथ चाइना सी रो पार्ट रे आस पळे आस है आ सेमान तो एमिति रे तांको चाइना तांको माने तांको ड्रैग तांको तंटी के कामुडी दर्छ है तो इंडोनेशिया पार्ट रे नो हमर ई छोटो मोटो को हम नहीं खुशी हो है इंडोनेशिया इज अ वेरी बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ योर माने तार जदी इकोनॉमी देखिवो इंडोनेशिया इज वेरी है अच्छा आप देखो एटा लिखिलो इंडिया हैज टोटल खाली लिखि दियो इंडिया हैज टोटल 7 लैंड नेवर्स 7 land neighbors. They are Pakistan, China, Afghanistan, China, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Bangladesh. ठीक है जी सिमिलरली the oceanic neighbors are Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Mauritius, and Madagascar. Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Mauritius, and Madagascar. माडागास्कर को खाली स्टार मार्क दियो एथि कि मु कहूची कि गवर्नमेंट माडागास्कर को आमे दि कहबे कि एथर का बजट रे हेइनी किंतु माडागास्कर रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एडिंग ड्यूरिंग इट्स फ्लड टाइम रे इंडियन नेवल हला आईएनएस हैज वर्कड इन रिमार्केबल रोल हला जोटा कि रिसेंट पास्ट रे 2000 आई थिंक 22 और 23 रे माडागास्कर बहुत हेवी फ्लड आस्थिला जोटा कि आमे ही जाई ठिया करछ पर्टिकुलरली हैला बाकी सब तो सब जिन आमे करछ तेथरे भी तांकर खुशी नो समान अरे से माने कोन हमर ई पटिया छोका होय जति लोक होबे खोरदा सेति मालदीव्स रो हबो कि नै सेति नै बुझछ कि नै आ केते लोक तांगा तो नडिया गछ पर चलले बुलले खाइले सोइला आ कोन तांगर हैला तब लेखा इंडिया पुनी लिखि चला इंडिया हैज टोटल ए लैंड फ्रंटियर India's total land frontier from 15,107 kilometer. Underline karo. Total land frontier 15,107 kilometer, which passes through swampy marshy lands of deserts. Swampy marshy land माने run of Kutch कथम कोच swampy marshy lands, comma और hyphen देखी deserts, plain areas, swampy marshy land, hyphen deserts, hyphen plain areas, hyphen rugged mountains. और repeat कोची swampy marshy land माने run of Kutch बकरो आरंभ कली, then desert, then plain areas, then rugged mountains, then snow covered peaks and thick forest. Snow covered peaks and thick forest. है बर्तमान देख मुझे गोटे कहली जस्टिफाई कर कौन है एटा स्वाम्पी मार्सी लैंड एक सेकेंड डेजर्ट गला 2 दिस इज डी डेजर्ट थर्ड प्लेन एरियाज बगर एपटे पड़े आला देन rugged mountains then कौन है देखछि स्नो कवर्ड पिक्स हैला स्नो कवर्ड पिक्स तापरे डेंस फॉरेस्ट एरिया हैला दिस इज व्हाट आवर इंडिया इज सो ब्यूटी हैला इट माने कंट्रास्ट देखो गोटे जगह रे टोटल डेजर्ट रु नेकी फॉरेस्ट
दैट इज व्हाट इंडिया रे मन को जतले पढिबो तुम गोटे आज गोटे मन के गोटे गुरु मंत्र दोची ट्रिक्स कोन सब बोले इंटरनलाइज करिक पढिबो नले इंडिया रे ना क्वेश्चन करि परियो ना लिखि परियो unless until if you do not inherit it is very difficult अरे सब किछि तो वर्तमान कॉस्मेटिक everything is cosmetic but unless until if you do not internalize it is very difficult to express अरे इंटरव्यू तो आ करियो नै थो ऊपर कुछ रियलिटीज में कोच केमती शॉर्टकट रे जिंसटा को स्मार्टली तम जिंसटा को रिप्रेजेंट कर परियो अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट इंडिया रे एक्सप्रेशन नो वर्ड रे तुम ठकी पळेबो तुम कहि दोछ वर्ड रे ठका ठकी करी पळेबो इंडिया रे पारिबोनी बिल्कुल जोथरे के हमें मास्टरी ठकीबारे नहीं तो थम्स अप पिउछु लिख लो क्वेश्चन पुल लिखो आदिटा क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सेट कवर कर देन पॉसिबल है पॉलिटिकल रीजनल ईयर लिखो नेम द स्टेट्स that touching the borders of Nepal है सेकंड भूटान थर्ड बांग्लादेश चलो फटाफट करो तीन इन संगे संग क्वेश्चन नेपाल भूटान एंड बांग्लादेश करो करो चला अरे रागुन तो एते गुडा क्वेश्चन दोज मुंड को चोबी दोज पूरा हैं और रागुन यदि आउरी बेसी दे देखो सल्ला नेपाल की मत कहला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल तामाने तमको धर पुणी पचारला आको तमे करि परिबो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज संगर सिक्किम हैला पांचटा रहिला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देन बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम करि परिबो भूटान रे सेमती सिक्किम वेस्ट बंगाल आसाम तीनटा अरुणाचल प्रदेश चारटा हैला सिक्किम तुम से दीदी घर कोटा वेस्ट बंगाल आसाम अरुणाचल प्रदेश थर्ड रे बांग्लादेश रे वेस्ट बंगाल आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम इज नॉट कनेक्टेड बांग्लादेश करछि मिजोरम सॉरी हाँ हाँ मिजोरम यस त्रिपुरा मिजोरम है त्रिपुरा मिजोरम चारटा गल पांचटा गल ठीक अच्छे आ काली मु तुमको कही कि बांग्लादेश पछरे माने जोटा हला बहुत जिनस अच्छी मत लगे कि बांग्लादेश वाज टॉट ए लेसन इन 1971
जदि इंडिया तुम जानी जदि इंडिया इंटरवेन कर बांग्लादेश आज लिबरेशन पाई था तुम जानी कि नहीं अलग हो गला खुशी रे ता संगे पड़ी मारिक नड़ा भर्ती करते मारिकी नड़ा भर्ती करते जदि इंदिरा गांधी इंटरफेयर हम इंडियन गवर्नमेंट न करता बांग्लादेश वोंट बी ए इंडिपेंडेंट स्टेट आम कहीं दयारे चलचु हाँ पुक पुक हो कौन से एते खराब तुम पढ़ो एटा सब तुम कहीं कहूँ डॉक्यूमेंटरी देख डॉक्यूमेंटरी पढ़ अनलेस अंटिल तुम देख सिविल सर्विस खाली माने जमती देखिवाटा ना माने सुनिया को जमती इजी एक्चुअली सेते नुह अनलेस अंटिल इफ यू डोंट इनकलकेट द थिंग्स बुझे कि नहीं निज भीतर इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बढ़ाओ भाई सर कहीं कौन होता बांग्लादेश कौन पे एमती है तार रिलेशन नहीं कि आजीर रिलेशन मन देख एनी बायलैटरल रिलेशन इंडिया ऊपर जदि तुम पढ़िबो इट इज ऑल कनेक्टेड विथ ऑल सच थिंग्स पास्ट रिकॉर्ड्स मु तुम कहीं कोडा कहूची आई हैव गॉट सिंस ज्योग्राफी इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आई हैव गॉट वेरी मच प्रिविलेज टू टेल अबाउट ऑल दिस थिंग बिकॉज़ इट्स एन ओनर्स अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू नो कौन हितला कौन पे हितला कौन नहीं हैला दिस इज कहीं के रीजनल पार्ट रे हमर आसुची इंडियन नेबर्स पॉलिटिकल अच्छा पुणी मुझे ना कहि भी बांग्लादेश रे जेमती वर्तमान की मैडम शेख हसीना इज नाउ लीडिंग हैला तो तांकर अलग टाइप रो हैला एंड इवन इफ बांग्लादेश जति मु कहि भी कि बांग्लादेश इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ व्हिच प्रोडक्शन सरला जूट जूट कैड इशू जिन जूट बांग्लादेश जूट वर्तमान वर्ल्ड फेमस डिमांडेबल हैला आउ की एमती कार जूट एमती जस्ट ऑन द फ्लोर इंडिया सर वेस्ट बंगाल इंडिया सेकंड रे अछि वर्ल्ड सेकंड रे अछि जे मु कहै डिमांडेबल मु पचाली आई एम नॉट आस्किंग द प्रोडक्शन जेमती वर्ल्ड ट्रेड मार्केट रे जेमती कोहा जाय हैला कि सेमती इंडिया रे वर्तमान जेमती मु कहबी कस्तूरी कटन स्मृति ईरानी व्हेन शी वाज द योर टेक्सटाइल मिनिस्टर शी वाज means I mean advertise our माने particular base for this one but same जेमती डिमांड रे मु कहबी वर्ल्ड ट्रेड रे जेमती बांग्लादेश रो जेमती कॉटन डिमांड हैला इयरली विथ अस प्री इंडिपेंडेंस टाइम आमे थिलु वर्तमान नो हैला आउ सेमती को कंट्री रे कॉटन डिमांड वर्ल्ड रे नंबर 1 सी सबटु बड़ ट्रेड रे तार नंबर 1 किए से चाइना चालू इजिप्शियन कॉटन मन रख अरविंद मिल्स लुइस फिलिप्स जोडियक तुम देखियो सब जो शर्ट बनौचंदी इजिप्ट से चारि वेराइटी तंकर सब कपड़ा से दी वेराइटी मेनली ए जो कॉटन गोड़ा तमर इजिप्शियन कॉटन तुम देखियो शर्ट गोड़ा मिनिमम तार दाम 4500 स्टार्ट हो 3500 4000 मैं देखियो तार इतने स्मूथ सो स्मूथ and तमे ताको तो एमती ताको क्रॉस कर दो बैग रे पूरी को नहीं परियो and it was not in single wrinkle एग्रीकल्चर पढ़ाइला बेले मन पके मु कहि देबी कॉटन रे को जिंसटा जको एमती रहउछ हैला क्वेश्चन चलना पुन लेख Pakistan and Afghanistan has a common international boundary. Pakistan and Afghanistan have a very good. Tripura रे सबु कंपनी रो फैक्ट्री अछि कॉटन रो हैला कौन कहली कि पाकिस्तान अफगानिस्तान have a common international boundary comma which is known as Durand line which is known as Durand line ठीक है जी मु तुमको एटी डायग्राम देखो एबे टिके रुओ सेटी लेखा तम निज डायग्राम में करो डूरांड लाइन कोन मुटी कहली डूरांड लाइन वर्तमान एटी देखो दिस इज पाकिस्तान
पाकिस्तान रो वर्तमान ए जो जगहटा तमरो अब दिस इज अफगानिस्तान डुरान लाइन टाला एटा हैला एडी खाली सुनी दियो बिफोर पाकिस्तान माने बिफोर 1947 डुरान लाइन जदी क्वेश्चन केन जदी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन देला केन तमरो पकेबो धरो स्टेटमेंट से मान लिखि चंती डुरान लाइन was Durand line you're making an boundary between India and Afghanistan हैला हम एति पढ़ देलो किंतु कॉमा देख से लिखिला बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम इट इज करेक्ट बुझे कि नहीं क्वेश्चन रे कॉमा देख बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ू कमिट कर दो हैला सेठी भूल हे गेले पूरी आउट चांस से लिखिला कि ध्यान से सुनो कि डुरान लाइन ऑल्सो तमने बर्तमान तुम जान लो पाकिस्तान अफगानिस्तान रो बट मु कहबी आज भी इंडिया शेयर करूची 107 किलोमीटर विथ पाकिस्तान दैट इज आल्सो डुरान लाइन जदि तमने पचारिबे तुमको कि डुरान लाइन इज ऑल इंडिया आल्सो स्टिल शेयरिंग विथ अफगानिस्तान यस असोसिएशन रीजनिंग द्वारा देला केते 107 किलोमीटर लेखो इंडिया स्टिल शेयर्स 107 kilometer border line 107 kilometer border line with Afghanistan कोटी दिस इज द रीजन एट देखा ही अफगानिस्तान जाइछि एई पार्टटा एडी कलर चेंज करले तुम जानि परिबो दिस इज पार्ट एडी सरला एत्ते की पार्ट हला अफगानिस्तान दिस इज एडी ए जो पार्टटा गला दिस इज 107 किलोमीटर हला ठीक अछि एथा पाखा पाखी मु देखुतली 10 टा 11 टा एसोसिएशन रीजनिंग पचारथिला अजानी एतका सब मिसे की हला लॉजिक स्ट्रांग करो खाली फैक्चुअल रे भी लॉजिक पचार देलेनी से माने पुल लिखा द फेमस रेड क्लिफ लाइन the famous red cliff line is existed between India hala in between India and Bangladesh in between India and Bangladesh ठीक है red cliff line Pakistan. and also India and Pakistan. बुझिएला एटा वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि मोस्टली हमें भूल करू रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश रो कौन थिला बिफोर 1971 इट वाज नेम्ड एज ईस्ट पाकिस्तान नाउ इट इज बांग्लादेश होला कि नहीं सो रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान सो आउ इंडिया बांग्लादेश सो बर्तन रेड क्लिफ मन रख सर डुरांड हो कि रेड क्लिफ हो एमाने समस्त हेले महान हस्ती हैला जोन आसी के हमर इनके बेंचमार्क कर दी पड़े ठीक अछि सब थर्ड लेखा मैकमोहन लाइन The McMahon line existed in between India and China. Our favorite country. हाँ सुनो सिरिल रेडक्लिफ क्या पर मैं किसी जिनसे कहबी हला तीनटा पढ़लो डुरांड रेडक्लिफ आउ मैकमोहन आ भीतर सबुठ डिस्टर्बिंग कोटा
मैकमोहन लाइन हला सुनिए कल लिखिए बेटर it will help you out in interview also sometimes. The present controversy over McMahon line, the present controversy over McMahon line is due to the encroachment of Chinese is due to the encroachment of Chinese into India's territory or India's land frontier. Chinese territory in including of Chinese encroachment of Chinese into India's land frontier. It is especially the Arunachal Pradesh. It is especially the Arunachal Pradesh where the demarcated lines, McMahon lines, demarcated lines is violated by China. Is violated by China. हला तमे देखितो हिंदी न्यूज़पेपर न्यूज़ रे प्राय देखितो पसियालेनी सेपडकू माडियालेनी सेपडकू कोइलेनी हला पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश हला वर्तमान आउट ए कंट्रोवर्शियल पार्ट रे खाली जस्ट कहि दोची को जगह रे इंडिया रे वर्तमान कोन हेतिला जस्ट हला एटी जानि नियो हला कारण रीजनल पार्ट रे इंडिया रे जेतु कुछ क्वेश्चन से माने पचरछन एटी तमे कोन देखुचो हियर वर्तमान पीओके जो हला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हला इतिके रीजन मन रख निजन एटलास संगे तुम कंपेयर कर से जदी पेंसिल अछि मार्क भी कर दियो ठीक है जी पीओके रीजन एटा हला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हला अक्साई चीन वर्तमान देखुचो सॉरी देखा अक्साई चीन एपटे एरिया रहला दिस इज अक्साई चीन हला आ नेहरू जो खुशी रे देई पकैतिले एपट एरिया बांटी देले आ बाड़ी पणस तो ताकू ने से पुनी सीता को दे देला ये ताकू पाकिस्तान ताकू आकू दे देला सी ताकू दे देला ये दी चलची तंगर माने जदी कहिबी these are were the great mistakes of India लागुनी कितने हमर कोन पे ग्रेट मिस्टेक कहले व्हाई जस्ट भाबे कोन तमे कोन पे एटा को मिस्टेक बार बार कहूच कोन व्हाट इज योर परसेप्शन लेवल मतलब लेट मी नो काहे की वर्तमान कहूच इट वाज एन ग्रेट मिस्टेक दैट कमिटेड इन द पास्ट कोन पे व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस गिव मी द रीजंस और देखो India wants to peace ताले हमें वर्तमान कहीं की फिलीपाइंस को पुनी देले एते गुडा ना ये बनी ब्रह्मोस देलो है इंडिया जदी पीस ताले फ्री में से नेला ना फिलीपाइंस रे सही टाइम रे हाल तो हमें 62 और 65 और 71 वार ही ना था ना you want to be monk now सुनिए अभी हुआ अरे किसी मैत्री कौन पाई जिनसटा व्हाई बीटा जिनस देखो तो एक्सप्रेशन केते डिफिकल्ट कहबो अभी किसी चाचा जी वाज आइडियलिस्टिक के रे सुनो चाचा नहीं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ओके देबो बता स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया यस तो कहो अब कौन सेंट्रल एशिया को एक्सेस बंद है
श्रावणी केमती कणे की टेरी के अनेज मते कह सीधा ए अनिल टेरी के अनेज मते कह माने तार गोटे आखि एपट लुचु आ गोटे आखि मते अनेज दीटा जिंस मेन इंपोर्टेंट by doing such it was a threat national security pratham threat to national security because enemy country has surrounded to us hala second national security pare second financial burden extra financial burden tamane eti kon indian army ro deploy kariya पड़छि tanks equipments everything heavier things deployed hala particularly area रे जेति हमर खर्च होछ तार हिसाब नै दीटा जिंस गोटे हला स्ट्रेटेजिकली जदि हम देखिबा बिकॉज ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी प्रथम जिंस गोटे कंट्री रे सबुठ बड़ जिंस हला नेशनल सिक्योरिटी हम कंट्री रे जदि प्रिएम्बल देखियो तमे कोनसी जगह रे प्रथम हला गवर्नमेंट मींस इट हैज टू बी गिव सिक्योरिटी टू द सिटीजन फर्स्ट हां कि ना आज बॉर्डर से जेटी लड़ुचंती बोली हम एटी पीसफुली बसछु नल तो म्यांमार कंडीशन ही था कुछ कि नहीं सेकंड इट इज योर फाइनेंशियल बॉर्डर दीटा जिंस सब इंपोर्टेंट जोटा कि कौन है स्ट्रेटेजिकल पोजीशन जो पर्टिकुलर सीता को दे देले इज इट ओके ठीक अछि वर्तमान जदि मो आउ गोटे जिंस कहबी हला एई संगे इंक्लूजन इंडिया रे वर्तमान दीटा जगह आ गोटे ऑक्साइड चीन एडल कंट्रोवर्शियल एरिया एटा ई तीनटा तो तुम देखुछो हला आ गोटे जदि मु कहबी एटी एटी मु डायग्राम टा करछि ए पट एशियर दिस इज डोकलाम इशू लेकिन द डोकलाम इशू which is a chicken neck corridor the डोकलाम इशू प्रथम लिखो द डोकलाम इशू which is a chicken neck corridor or tri-junction point which is a chicken neck corridor or tri-junction point Doklam issue which is a chicken neck point or tri-junction point in between India, Bhutan and China. Hello? Chicken neck point or tri-junction point in between India, Bhutan and China. कौन लिखी चला Chinese forces are illegally encroach. Chinese forces are illegally encroach few villages. Chinese forces are illegally encroach few villages in Bhutan to enter the borders of the West Bengal border or the borders of West Bengal. Hello? To enter the borders of West Bengal, hence making chaos over the region. Hence making chaos over the region. Sir, making the pore chaos. Chaos माने CHAOS. Chaos. Chaos माने disturbance. ठीक अछि आ गोटे जोटा एटी सियाचिन पाखरे एटी कोन अछि सेटा जेन्यू सेम जिंस एटी गलवान वैली हला लद्दाख सियाचिन लद्दाख एटी गलवान वैली हला गलवान का तुम्हार कोड ऐसे लिख लियो another disturbing part is your Galwan Valley in Siachen area of Ladakh. Galwan, Galwan, Galwan Valley. Galwan Valley. Another disturbing area is Galwan Valley, which is located in Siachen area, Ladakh. Ladakh, particularly Siachen Bakar, near to Siachen area in Ladakh. Same China, India.
कितने हमर बजेट रे कितने माने अननेसेसरी बर्डन से कर देले. You want to know the past background कौन हेतला shortly? Huh? It was during the time of that 1965 around Nehru जो समय पे चले. Sardar Vallabhbhai Patel was the your defense minister of India. When Chinese forces have encroached this place, we have got very much, strategically advanced position to counter them. It was at that time what happened. Sardar Vallabhbhai Patel was giving an order to the Indian Air Force to take a flew, and they was about to ready to counter them. And 100% there was a win-win situation. Whereas it was about to fly, what happened? Suddenly, Chachaji announced in AIR, All India Radio, that the war is adjourned. Mane India China. Gala sal. Sorry gala. Sange sang dhari ki कौन कह दिले कि war is adjourned. Sal. कितने बड़ा mistake देखो. काहेंकि it was because of सत्ता पोजीशन सत्ता लोभी जाना तमे ब्यूरोक्रेट सब हबो जाना कंट्री रे कोन कोन मिस्टेक हेतला सब कह देले हेला सला सब बुझो कि नहीं माने निया तो जाउतला बाल्टी पानी नि भूस किना ढालदा काहेंकि he was completely insecure about on Vallabhbhai's movement. Vallabhbhai is an low position, he is an iron man. ये तो खाली गुलाब संगी की बोलला छाड़ देखो तो गोटे छोटिया छोटिया डिसीजन इंडिया को पे करिया को पड़छे बुझिस जस्ट फील इट केते बड़ा प्रॉब्लम एटा अरइला ए मिस्टेक बर्तमान कोन जनरेशन वाइज पीढ़ी वाइज भोगुचन आमे भोगले तम छुआ भोगे ता छुआ भोगे भोगे तो चलला पूरा इट्स नॉट रिजॉल्व बिकॉज़ नाउ दीस आर द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली आल्सो बुझो कि नहीं अरे पाकिस्तान ने वोट कौन की कश्मीर इश्यू नहीं की वोट टाइम ना कौन की तंकरा है ना ओके ठीक अछि बुझी छी आर यू ऑल एंजॉयिंग ऑल यस और नो भल लागुची आ ठीक अछि आगु आउरी क्वेश्चन दिया एंजॉय माने भलो क्वेश्चन दिया हो ना अरे आई विल कम बैक टू नेक्स्ट पिक्चर अदर प्रथम लेखा एना देखो हेडिंग दियो द फिजियोग्राफी रीजन्स ऑफ इंडिया द फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया सब कहबे हला धीरे धीरे तुमको एना मु कहली टिल ड्रेनेज पर्यंत क्लास पूरा हेवी रहयो माने बुझो जम्मा मिस करनी गोटे माने जदि अधा रुटी छिंडेचा अधा खाई होनी टाइम हेलानी रुटी छोई देख पड़े आस खाई दिगसु द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया लेकिन चला on the basis of physiography India is usually divided into following divisions on the basis of physiography India is usually divided into following divisions. Number 1, the mountain ranges of the Himalayas, the mountain ranges of the Himalayas,
है mountain ranges of the Himalayas. Second, the triangular peninsular plateau, the triangular peninsula plateau. Third, the great North Indian or Gangetic plains. Fifth, the coastal plains and islands. है ठीक अच्छे प्लेन्स रे जीव है प्लेन्स रे कवर बस नंबर 1 लिखा हेडिंग दिया एटा सब हैला ऐसे गोटे बड बड पार्ट सब प्लेन्स हैला द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय नंबर 1 सर इंडियन डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू तो यार डेजर्ट जीवो इथिरे तमर कोतरे प्लेन्स एरिया रे हैला सेटा हम कहबी ट्रायंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू रे डेक्कन जीवो डोंट वरी इट विल बी कवर्ड लेखि चला लेखा द हिमालयस समस्त इंडिया मैप टा खोली के रख फिजियोग्राफी फिजिकल हला पर्टिकुलरली जदी कहबी एबे वर्तमान तमरो एका संगे 3-4 थर तमर यूज हो केमती एंगल देख हैला केमती केमती तम यूज करियो माने जदी म कहली एपटा खोलियो हिमालयस की एपटा ठीक अछि ए दुटा एमती उठे की एमती देखियो सर लेखा geographically the Himalayas divided the geographically Himalayas are grouped into or है into 4 divisions है number 1 Trans Himalaya Trans Himalaya second Greater Himalaya ये लिख ली मु TH मु शॉर्ट फॉर्म लिखुची तमन लिखा Trans Himalaya then Greater Himalayas then third Middle Himalayas then fourth Shivaliks तमे फॉर योर ओन कन्वीनियंस तमे डायग्राम भी बनै परियो हाउ को
small diagram. You can do the small diagram. ठीक अछि? One, two, three, four. जोड़ा के लिखिए. Trans, greater, middle, और Physiography. 1, 2, 3, 4. बहुत सुंदर सो मैप बनौछ मु एठू देखि पारुछे. जनकर अंगूठी बुली जाउची मैप बुलेला बळकु हम देखि पारुछे. ठीक कितने सुंदर मैप. पर किछ नै लाज लाज अरे लाज कला माने निजो फील होछ ताने आगु इंप्रूव पड़बो सेतरे किछ नै देखे खाली थेमेटिक मैप कोहंती माने छोटो जति पार्ट दरकार इंडिया कोन मेंचे पाछि हला जो पार्ट जति दरकार अनिल ठीक अछि बट इट सीम्स कि रन ऑफ कच्छ आ तोर काठियावारा रो चारिटा अंगुली माने जेंति म हाथ अंगुली बाहर जो ग्लोब्स देखा होछि बन्नी रैबिट तुम्हारे अंधार एसी चलছে भल आगे म्यूजिक लगे दिले भल लागियो एठी साइड रे नहीं ओके अरे एठी म्यूजिक भल म्यूजिक टिके करियो टिके भल लागियो हला ओके ठीक अछि सेपटक जाइनी बहुत जन अभिलिप्सा को सर मोर देखिया आसी ना कोन बहुत जन को देखिली एई पार्ट दीटा जेंति बन्नी रैबिट ठिया आइछ कान हला माने आर यू मेकिंग इंडिया माने तू इंडिया बनिछ ना तंगीटा चिपी जाइछ इंडिया रे मु बुझ पन्नी हां आशीष Devansis, it appears like an that I am moving on the palmir nut तो जेमते बनै छु ऊपर इतने सुंदर माने जी टिके फील होछि ना कि दिस इज ए स्कूल लेवल जस्ट फील दैट वन दिस इज ए स्कूल लेवल तो मंदो करछु से मंदो के नाम देख देख माय गुडनेस हला स्कूल लेवल रे 7th 8th रे पिलाने बनांती and you people are appearing above PG level exam and this is the status hence please correct yourself hela next week बंद मु टाइम देल next week माने काली रे भी यदि इंप्रूव वाला ठीक अछि पर छोट छोट मैप हला सोन से मन को फील नै की पढ़ा ऊपर सर्विस लेवल वाला वाला प्रॉब्लम you are cheating yourself next week रे मु रहउनी मु दिल्ली जाउ छी काली भी कहितली जदी हबो मंडे नेबी or else I will on the May second week maybe hela 7th पर it will be resumed दीपक सर will continue that one and तम अलगा क्लास जो भी जहार अछि से नेबे मु कंटिन्यू जरा करियो गोटे वीक 8 डेज पे मु जाउ छी 8 9 डेज हला मंडे जदी हबो अदरवाइज एल्स ता भीतर मु तुमको टैक्स देबी गोटे जिंस कि एटलीस्ट तमे इंप्रूवमेंट करो तमर कोथरे डायग्राम्स पर दिस इज अ वेरी मिनिमम थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस वन अदरवाइज
एंड बिलीव मी दैट वन तुम यदि पढ़िबो एमति नो कि मो ना खराब की मास्टर पढ़ितला ना हमको तो सिखाई नथला दैट इज द मेन थिंग बर्तमान दिया बहुत जगह डायग्राम करके दिखाओ कर जेमति मु थेमेटिक तुमको एटा सिखेई आ गुटे केमति इट इज लाइक दिस माने पर्टिकुलरली यू आर शोइंग दैट डेक्कन लावा प्लेटिंग यू नीड नॉट टू गो फॉर दिस वन तुम एटा को थेमेटिक वन छोटिया पार्ट देखि दो सपोज तुमको कहउची अरुणाचल प्रदेश आ एपट पार्ट यू गो फॉर दिस वन एटी नला पर्टिकुलरली नेकी मैं एतिक पार्ट नहीं गला हला इवेंचुअली मु तुमको कहिबि से पार्ट जेति की दरकार तुम सेति कर दैट विल हेल्प यू आउट एंड आल्सो तुम माइंड रे तुम सिग्नल भी गला कि तुम एते पढुचो मु खाली एति की फोकस कर नॉर्थ ईस्ट पार्ट मु सेपट पार्ट पार्ट एति फोकस कर मु पेनिनसुला पार्ट माने बिंदिया तळो को मु एति पार्ट फोकस कर बुझছো कि नहीं नॉले कोन हो एबे तुम सुनो ना इंडिया से कितने बड़टा तो माइंड रे तुम सेग्रीगेशन आसी गला टेक्निकली मो माइंड रे कोन इंपोर्टेंट हुए टेक सिग्नल्स जोटा हम सुनिछु सेटा ही मैंने हेल्प करे हमको हला लेखा तापरे ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय such mountain ranges are immediately such mountain ranges are immediately above the greater Himalayas are above the greater Himalayas are known as Trans Himalayas. हमको द्वारा गोटे क्वेश्चन जमी पचार से भूली गली पुणी ता पूर्वटा जो देइतिला कि कौन लिखलो तमे ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय आ गोटे सिवालिक्स हैला सिवालिक्स एटा जो लिखिलो एटा कौन हैला तो सपोज तुम्हारे पचारला अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ तो जे तमे खाता रे भी गारो दे परियो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ बुझियला ठीक अछि राइट दिस वन सेम के लिखो सेम करेक्ट गावा टाइम जैसे प्रीवियस डायग्राम में ट्रांस हिमालय कौन लिखो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कौन लिख लो आर नोन एज ट्रांस हिमालय कॉमा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर एज फॉलोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर एज फॉलोज कोई डायग्राम करो गोटे इजी रहइबो मेमोराइज भलो रहइबो तमरा लिखिल कौन कौन काराकोरम अरे एसी गुडा कि बंद कर दूस कि मत एते स्वेटिंग हो मोर लद्दाख कैलाश झांस्कार और जांस्कार जहां भी कौन दिस इज अगेन नॉर्थ टू साउथ है ना लिखो कैलाश काराकोरम लद्दाख कैलाश एंड झांस्कर झांस्कार और जांस्कार जहां भी कौन डायग्राम
1 2 3 4 जेमती करछु सेमती करो काराकोरम देखाओनी 1 2 3 4 लद्दाख रु 2 3 टाको कंटिन्यू करियो मु काई कोइ तारा रीजन मु कहबी हला 2 रो सीधा छाड़ी की 3 टाको टाणी की नबो पकेबो कोठी मानसरोवर लेक से पाखुनी की मु काई कहूची तुमको दाखिल एना एक्सप्लेन करले बुझियो तमे कि तू नहीं तिब्बत रे नहीं छाड़ी दोछु कि हैं हनुमान लांजो तो फोपाड़ी दोछु से पडू भला भाबे करो डायग्राम नले मु पूरा आंगुली छेची देबी टिके आउ टिके ब्रॉड कर हला ठीक धीरे धीरे और घर जेंग जतिक देली आज घर जेंग प्रैक्टिस कर जीव आज खाई दे कि किछि लगी नाही कि नखा पूर्व आधा घंटा पछी प्रैक्टिस कर मु तुमको जोटा कहूची काहे कि टेक्निकली सब पाठ पढ़ मूर्ख वाला पढ़ले किछि हबनी पढ़िबो तमे करिवो तमरो संगे संग 30% 40% मेमोरी लेवल सेडिमेंटाइज हे जो बहुत दिन मन रही जो तमे ए सेम जिंस को तमे 4 दिन छाड़ दियो तमे पूरा नुआ लागि बुझो कि नहीं I am here to guide you all in a proper way with honesty ठीक है जी निज भीतर भी सेम जिंस रे honesty otherwise you cannot able to dissolve the questions प्रथम लिखो काराकोरम रेंज Karakoram range is the northernmost range of Trans-Himalaya. Karakoram range is the northernmost range of Trans-Himalaya. This is Karakoram. It's better than Karakoram number. This is Karakoram, northernmost range of Trans-Himalaya. Second, second, K2, है कौन था ना Godwin Austen. K2 is the highest peak of Karakoram range. K2 is the highest peak of Karakoram range. K2 रे कितने उच्चता 8611 मीटर माने 8.6 किलोमीटर है ना K2 is also known as Godwin Austen. It is also known as Godwin Austen. ठीक है जी It is the second highest peak in the world. K2. It is the second highest peak in the world. It is the second highest peak in the world. The other important peaks are next. The other important peaks are देखिए घासेर बूम 1 लिखी चला मैं कहबी
घासेर boom 2, then third broad peak. घासेर boom 1, घासेर boom 2, broad peak. है बर्तमान तुम कम है मत घासेर boom 1, घासेर boom 2 और broad peak टिल ड्रेनेज पैटर्न पर्यंत तुम इंडिया बहुत इजी कर देबी तुम मन एक्सरसाइज क्लास रे करी तुम रही जो इंडिया ऊपर डर छाड़ी जो हला देखे घासेर boom मत खोजी देख और लेख सेठी ब्रैकेट रे केते केते तार उच्चता लेख सब देखुच ये सबू जाक ये अच्छी ऊपर घासेर boom पाखापाखि देखु सब घासेर boom 1 है 8068, घासेर boom 2 है 8035, ब्रॉड पीक है 8047. रिपीट करने ऑनलाइन भी खोल की बस otherwise there is no meaning if you want to take the benefits of an hybrid mode class offline then I would suggest please sit with the atlas as a senior mentor this is my advice to all of you please listen this one खाली लिखी गले किछि लाभ नहीं घासेर boom 8068 घासेर boom 2 वाला 8035 घासेर boom ए तापरे ब्रॉड पीक हैला 8047 सॉरी एटा केते कहली 8068 8035 8047 हैला ठीक अछि वर्तमान टिके पॉलिटिकल सिनेरियो देखिनबा काराकोरम रेंज रे कोन हेछि करेंटली कोन कोन जिंस सब एटी होछि हैला वर्तमान देखो एटी काराकोरम पाखरे तुम जे देखुछ वर्तमान कोडी एटी सब कन्फ्लिक्टिंग एरिया अति पूर्व मु तुम देखौतिली समस्त पूरा अटेंटिव रो रे मु गोटे गोटे वर्ड मोर जति मु नोट सब देखु सेरा खाली रेफरेंस बर तुम खाता रे अधिक लिखा होछ करेंटली बिलीव मी इट विल ऑल आर क्वेश्चंस तुमको तुम आज भी कहूची नेट रे डाउनलोड दैट इज ऑफ टू नो यूज संडा भी खाइबनी ताको चोबिया को देले तमे तम माइंड रे केते पुरोच दैट इज मोर इंपोर्टेंट एंड दैट इज व्हाई यू ऑल आर हियर टू लिसन द लेक्चर्स सो बी सिट माने टिके कंसंट्रेशन रख मु तुम कौन कहबी व्यवसाय पीक तुम देखछ सेठी बर्तमान तुम कंट्रोवर्सी एरिया कोठी कहूची सियाचिन पाखरे कोठी झगड़ा चलची हमर व्यवसाय पीक देखुछ इंडियन आर्मी रे सेठी गोटे हेवी डिप्लॉयमेंट मन देख जे सुनुछ सुनो मन रखी दियो और यू कैन राइट तुम साइड तुम करि परियो देवसाई पीक देखुछ दिस इज देवसाई पीक पॉइंट दिस इज देवसाई हला इंडियन आर्मी रे कोई जगह रे देवसाई पीक अच्छा देन सिटी खाली गोटे मार्क कर दियो गोटे रिवर जाइछि खाली मार्क कर दियो ड्रेनेज रो सुविधा हो गोटे देखु गोटे सियोक रिवर बोली गोटे जाइछि सियोक रिवर खाली मन रखि त मु ड्रेनेज बोले तुमको पचारि सियोक ऊपर कहबी सियोक ऊपर कहबी जाइछि गोटे जाइछि पाख देकी सियोक रिवर SHYOK सियोक अच्छा सेठी बड सियोक देखुछ रेमो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर सब देखुछ अच्छी रेमो रेमो कॉन्टिनेंट जो भलो नाचे से नो रेमो अरे रेमो कॉन्टिनेंट भलो नाचे नी रेमो डिसूजा आई एम सॉरी एई गुडा कर तुम तो करेक्ट करबा आई एक्सप्लेन सिंपली हला रेमो डिसूजा भलो नाचे नी सो वेरी सोबर पर्सनालिटी हां सब तो भलो डिसूजा मतलब डांस गुडा मत को जाय कि प्रभु देवा को सिखै छु इज इट ट्रू आई डू नॉट नो कौन सेपटे
केते भल लागुची समस्त मैप देखियार व्यस्त इट लुक्स सो ओरिजिनल नहीं जेमती लागुची गाई जेमती ता कुंडे भीतर चाकुंडा पुरी खाई सेमती समस्त एटलास से मुंह पुरैछ वेरी गुड हाय सुनील मु अछि भल भल देख देख श्रावणी के देखाउनी आज ओइट बसछ कि ओहो एटलास भीतर पस जाइछ वेरी गुड ओइ चिता मुंडो कट्टी धरि भल भल देख कर बहुत देखि पड़ची देखिबार चाहानी रु एटलास रो पेज ता जी भांग पड़िला जा हो अरे नडियाटे जाई बाड़ा घरे जाई नडियाटा बाड़ा कि निजे बाड़े हो जाओ निज मुंडो को हैला ठीक अछि देखुछो सेठी मार्क कर दियो दुटा इंपोर्टेंट मु तुम कहबी रेमो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर सपोज तुम गोटे क्रिएटिव क्वेश्चन पचार दो देखो कोठ भी नै मु जति जिंस तुमको एठी कहूची क्वेश्चंस कोठ रे भी तुम पचारबे दिस आर ऑल क्रिएटिव कोन रेमो ग्लेशियर कि सियाचिन ग्लेशियर कोठी एमती टाइप रो क्वेश्चन पचार दिस इज कोठी काराकोरम रेंज रे कोड ट्रांस हिमालय रे क्वेश्चन केमती पचारिबे कोथरे आसी ट्रांस हिमालय पार्ट रे काराकोरम रेंज रे हैला पुणी सेठी गोटे आगे जगह देखा होची तमे खोजी मते बाहर कलो अक्साई चीन देखो सेठ लिखा हिच कोठी मु जदी कहली फिजिकल पॉलिटिकल दीटा अंग देखिबो खाली सब जिंस तो मु कहि दोची इंडिया रा गुरु गोटे जगह पाइबोनी प्रथम पेज तीनटा पेज एटु भी किछि मोर देना गोटे फॉर्म देखोची एटु देखोची लद्दाख जाम बसबे पॉलिटिकल देखिबो फिजिकल देखिबो आ बहुत जगह प्रथम पार्ट ता एटा भी देखिबो आंगुल टाइम भी तीनटा जगह तमरो तीनटा जगह पेज लोटुथो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट इंडिया रे मन करिवे हला वर्ल्ड कोन थला गोटे पेज लोटै देउतला बट एठी तीन तीनटा रेफरेंस कॉलेज जाएंगी तमे खोजी पाई परियो दिस इज एन असाइनमेंट क्लास रे दिल्ली किए पाइला मते अक्साई चीन मते को स्टूडेंट रे ठीक अछि अक्साई चीन देखो तमे एति की जानो अक्साई चीन गोटे देनी गोटे अलगा को अटलास से देख अक्साई चीन ता तमर एई पटे एरिया ता ए जो सोडा प्लेन्स तो पार्ट देछि सोडा प्लेन्स हला से पार्ट रे अच्छा एई पार्ट हम लिखि दी हला मु 10 तमे से तमे देखो देखो मु एटा कंपेयर करछि देखो तमे जस्ट एटी कंपेयर करो एई जगह रे देखो छ सोडा प्लेन ए पटे आसी कि नहीं सोडा प्लेन और डेंस प्लेन ता अक्साई चेन ए पट एरिया हैला कंट्रोवर्शियल एरिया जोटा ठीक अछि फिर तमे मार्क कर दियो अब समस्त प्लीज पेंसिल आनी की मार्क करो मो आगे जी कलम रे गारुतो ता कलम मु कन्फिस्केट करने नै जी सीधा पेंसिल रे ओनली एटलास रे पेंसिल आउ योर मार्कर इज अलाउड हैला अब माने पेंसिल माने भलो पेंसिल एमती नो से पेंसिल मार्क करथु आ से तले खाली माने खाली केवल दाग भी पड़नो तो दर सेमती अच्छे वाला पेंसिल हैला अप्सरा रा ब्लैक ता नहीं कैसे दैट इज गुड अप्सरा इज ए पेंसिल नेम इट इज नॉट एन बेबी हैला और आइडियल की खुशी ठीक अछि नेक्स्ट लेखा Aksai Chin is the largest. Aksai Chin is the Aksai. No, I'm sorry. Cut it. Aksai Chin area in Siachen glacier
देखो थर्ड पॉइंट से ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट रे सियाचिन ग्लेशियर comma is the Asia's longest glacier. Siachen glacier comma is the Asia's longest glacier located here. Asia's longest glacier is located here. ठीक अच्छे से लिखला it is placed in the पचारे परीक्षा पचारतला एटा it is placed in the Nubra Valley. It is placed in the Nubra Valley. Nubra. It is placed in the Nubra Valley. Nubra. It is placed in the Nubra Valley. Placed in the Nubra Valley, having more than, having more than 72 kilometer long. ठीक अच्छे बेले देखियो तो मैं प्राय बहुत क्वेश्चन सॉल्व कला बड़े अलग ग्लासियर सब भी नहीं देई था हैला एट लेख द अदर इंपोर्टेंट ग्लासियर्स इन दिस रीजन माने काराकोरम रेंज ऊपर कथा कहूछ के आर Baifo, Baltro, Hipsar, Baifo, Baltar, Hipsar, and Botra. Baifo, Baltro, Hipsar, and Botra. जस्ट मैं कोरिलेट करछि कोन करंट ऊपर कोन पे एगुडा हम दोछि किस दिन तळे माने किछि माने रिसेंटली वर्तमान से माने कहउछन्ती कि बाइफो ग्लेशियर इज रिट्रेटिंग हैला बाइफो ग्लेशियर कथा म आ कथा कहउछि बाइफो बाल्ट्रो माने सप्राय का भीतर मेजरली एना जदी रिट्रेट करछन्ती मोस्टली चारटा भीतर नंबर 1 बाइफो आ हिप्सार कोन हेछि सुनो वर्तमान कहउछन्ती climate change रो जो इफेक्ट है देयर आर टू रीजंस मे बी ग्लोबल वार्मिंग रो बहुत इफेक्ट और सेकंड समान कहउछन्ती वर्तमान देयर इज एन आर्टिकल सब्सिक्वेंट आर्टिकल खाली जानि रखो कि समान कहउछन्ती कि हेवी डिप्लॉयमेंट जो इंडियन आर्मी रो होछि हैला बिकॉज़ ऑफ द द ब्लैक कार्बन इमिशन दैट मे लीड टू सच consequences और मे बी को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 समय जोटा कि वर्तमान देखो जानी के रखा इट वाज नॉट पब्लिकाइज्ड बट जब सिविल सर्विस एग्जाम दो जान कौन को कि वर्ल्ड वॉर 2 रो प्लूटोनियम माने जो तले तमर हेतला गोटे मे बी जतले वर्ल्ड वॉर 2 जतले पक्का को यूएस वियतनाम मे बी हिमालय रे को जाकर सेठी पड़ी की रही एंड दैट इज बिकमिंग डिसइंटीग्रेटेड मे बी फ्रॉम दिस वर्ल्ड वॉर समय मे बी 1 century और ड्यूरिंग दैट पीरियड इन 80-90 years अला that may leads to disintegrate हैला काहे ना अरे पडला माने कोन तारा हाफ लाइफ पीरियड से डिसइंटीग्रेट होबो that may leads to the melting of glaciers. This is just in the air, may be true or may not be true, but हेबार बहुत चांसेस एति पई because कहउछ कि it was might be late Indira Gandhi or PM, she might be known about the fact, but वर्तमान थोड़ी ताको इना खुजी बाहर करियो तक बुझो कि नहीं वर्ल्ड वॉर 2 समय वर्तमान देखु केमती केमती गोटे गोटे जगह रे यूएस रे ओई जगह रे गोटे गोटे जगह रे हठात ना सामान्य बैकआउट करछंती गोटे बम बाहरची देखतो किसी न्यूज़ सब पेपर बाहरची सब जो जिंस गोडा बुझो तो 100 years बैक रे बेबी से बाटुछ एबे तो गोटे कोठी हेतला यूएस रे हेतला आ गोटे कोठी हेतला एमती बाहरला फटकिना सामान्य वर्ल्ड वॉर 2 समय ठीक अछि
तो जान मु तुमको कहली कि कौन पई रिट्रीट करूची ग्लासियर्स कोडा हला बुझी हला क्लियर नेक्स्ट लेखा लद्दाख रेंज The Ladakh range lies southwest of the Karakoram. The Ladakh range, देखो Ladakh range lies southeast of the Karakoram. Please underline. This is having an average elevation. This is having an average elevation. This is having an average elevation more than 5,000 meters. Yes, 5,000 meters. Next point, Ladakh katha mu gochu. Ladakh is the highest plateau of India. Ladakh plateau is the highest plateau of India, located near to this range. पुण्य का एटी देखुछ गोटे लेक अछि पैंगोंग सो देखुछ पैंगोंग सो एई बड लेकटा दिस इज पैंगोंग सो अछि देखुछ पैंगोंग सो this is पैंगोंग सो this one is साप बडा लंबी है पैंगोंग सो अछि पैंगोंग सो अछि लेखा अछि और आप देखुछ मिलुछि लेखा The controversial Pangong So is located here, Ladakh area. कौन पे controversial? 70% of its area is occupied by China. 70% of its area is illegally occupied by China. ठीक है जी नेक्स्ट थर्ड रे Kailas range third रे it is Kailas range मु तुम सेतले कहितली कि डायग्राम कला बळे तमे टू माने एटा जदी तमे लद्दाख बनैलो तापर तुमको एटा कहितली मु इफ दिस इज लद्दाख सेतले कहितली ना काहे की तार मैं एक्सप्लेन करछि एंड दिस इज Kailas हला प्रथम लेखो Kailas range is an offshoot of Ladakh OFFSHOT Kailas range is an offshoot of Ladakh range है ना ऑफशूट माने कौन तुम माइंड आस्तु ऑफशूट माने हला इट इज एन एक्सटेंशन ऑफशूट माने तुम साइड रे लिखि दियो कि ऑफशूट मींस एक्सटेंशन
है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाला आसे कि कैलाश रेंज सुनो बोला बे कैलाश रेंज अनिल कैलाश रेंज इज एन एक्सटेंशन माने जति कुआ जीवो इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन डी पकड़ दिवो ऑफ लद्दाख एक्सटेंशन माने जहां अपशूट माने भी सही है सेम जिंस है ना ऑलरेडी आसी सब सब जंक लाइन गोटे क्वेश्चन अच्छा बर्तमान इथरे कोन तमे देखुछ सेठी डायग्राम रे देखो इंडस रिवर पाखा पाखी बाहर सेटू बाहर छी कैलाश रो तळु देखो इंडस रिवर बाहर छी जस्ट अंगुली दे के मार्क कर खाली देखनी कि पेंसिल दे अच्छी ने बाहर छी इंडस बाहर छी फिजिकल देखो तुम सेंट पॉलिटिकल कंपेयर करिवो हैला एठी देखो तुम आराम से इंडस टाइप पाखरु बाहर छी हैला लेखो द इंडस रिवर originates in the northern slope of the Indus River originates from the northern slopes of Kailash range. है ना ठीक अच्छी भल लगे जानी मन है क्वेश्चन आकार सब आप जहाँ भी पढ़े केमती मन रहा केमती क्वेश्चन पड़ो केमती आम करूँ है गोस्वानी कहे गोस्वानी प्रॉब्लम बुझुच सब कौन मुझे तुमको कौन शिखाऊँ फैक्चुअल को भी एनालिटिकली मन रख मुझे तुमको आगुरी भी प्रथम दिन क्लास रे कौन कही सब बेले कॉन्सेप्ट रु फैक्ट को जाओ एटा हला करेक्ट प्रोसेस एटा हला रॉन्ग प्रोसेस एटा आज 150 वर्ष तले एमती होतला वर्तमान मॉडर्न जिंस गुडा को सेवडा ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट दैट वन को जिंस तमे जानियो हैला इजी रहबे पढिया पे जानिया पे देन लास्ट वन झास्कार रेंज This is the southernmost range of Trans-Himalaya. This is the southernmost range of Trans-Himalaya. This is the southernmost range of Trans-Himalaya. The Jaskar range is almost run parallel to the Greater Himalaya. देखो छोटे जगह नंगा पर्वत देखो खोजी बार कर नंगा पर्वत Shweta, please mute yourself. लंगा लिखा पेपर नंगा पर्वत 8120 मीटर lies in the Jaskar range. The नंगा पर्वत कहते 8120 मीटर lies in the Jaskar range. Yes, it's okay. 6 मीटर बार्गेन कर दिले ले जाए हेला it is 40 in the Jaskar range. बर्तमान मते तुम एटलास देखी को फिजिकल पॉलिटिकल कि नंगा पर्वत को टेरिटोरी आसुची को मते विजुअली मत देखी को
Very good. Lekha. Nanga Parbat currently comes in Pak occupied Kashmir. ठीक ଅଛି ପୁଣି ଅଧା ରହିଗଲା ପୁଣି ଏଇଟା କୋଉ ଟେରିଟୋରୀରେ ଆସୁଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରେ ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର या लद्दाख कंपेयर करके देखो लद्दाख आସୁଛି ହେଲା इट्स नॉट जम्मू काश्मीर हबन लद्दाख रे आସୁଛି ऊपर पर्सन टा नंगा पर्वत लद्दाख आप ऊपर कश्मीर एपटे जीवन ऊपर ठीक है दिस इज नंगा पर्वत कन्विंस किसी नहीं आराम से अरे देखो इंडिया रे कोन चीज देखो तमे तमे गोटे जिंस मार्क करछो वर्ल्ड रे पढला तमे तमे खाली माने गोटे सुपरफिशियली जिंसटा जानथलो बट इंडिया रे केते डिटेल क्वेश्चन सब बेले क्वेश्चन ओरिएंटेड पढो बुझो कि नहीं आ इंडिया रे दिल्ली एमटी ही पचरा हुए क्वेश्चन तो मु जदी ठकिया मुड रहबी ना मु एमटी करबी पळेबी कि जानि परिबनी बट अदरवाइज यू नो इट इज एन जो कोन कोन धर्म दोष यू पीपल आर माय रिस्पांसिबिलिटीज बुझो कि नहीं सो जहां कहूची पड़ बेसी माने क्वेश्चन सब पचार क्वेश्चन न पचार लाभनी क्लियर ए पिक्चर डायग्राम रे हैला एठी तुम देखुछो कि पर्टिकुलरली ए जगह रहउची सो हेंस इट इज फॉल्स इन योर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड लोकेटेड इन लद्दाख Next, the bell rings. धीरे धीरे नोचे हैला क्वेश्चन बुक क्वेश्चन कितना बन खाली दी लाइन लिखो हैला नेक्स्ट हेडिंग दियो ग्रेटर हिमालय नेक्स्ट ला तमरो ग्रेटर हिमालय गोटे लाइन खाली लिखो है ना ट्रांस then second greater these are the innermost range among all the Himalayan ranges is underline innermost these are the innermost range only greater Himalaya as the innermost range they are the innermost range among all the Himalayan ranges its average height is above 6100 meter above MSL 6100 meter above MSL माने mean sea level तार average एडो से पचार average height mean sea level and average width is 25 kilometer and average width is 25 kilometer है
आज क्वेश्चन करबनी काहे ना क्वेश्चन जोड़ा अछि तमरो ग्रेटर हिमालय न सरले तमे करि परिबनी किछ दरकार ये नै ला लेट इट बी कंप्लीट काली सिंसरा करियो हला लेखि चलो इट इज द loftiest and most continuous range in the world it is the जीवो एटा खाली अल्प दी लाइन लिख दे हला कारण एटा बहुत इंपोर्टेंट रे it is the loftiest and most continuous range please underline पचान दे बड़ा कंसी क्या भीतर किए सबटू कंटीन्यूअस मोस्ट कंटीन्यूअस हला कोन लिखली मु loftiest and most continuous lofty माने उच्चता को कहते loftiest हला and most continuous बेले पचारिबे which among the following ranges of Himalaya are particularly the continuous Karakoram, Ladakh, Kailas, माने sorry your Trans Himalaya, Greater, Middle और Siwaliks हला मोस्ट जगह मु देखि छि पिला फंडामेंटली माने इवन इफ सेठी भी हला कि मैक्सिमम सो शिवालिक को चूज कर नो एब्सोल्युटली रॉन्ग शिवालिक्स इज डिसकंटिन्यूअस भांगी काच कंटिन्यूअस जदी जणिए सेला ग्रेटर हिमालय आ तार एक्चुअल रूप देखाई छि कोठी नेपाल रे भला भी सुनै जिंस ओड खाली मु तुमको एनसीईआरटी कोनी एनसीईआरटी फॉरेनर देयर आर 4-5टा बुक्स रो एमालगेशन प्लस करंट सब मिसै कोच तुम शिवालिक्स केबे बी कंटीन्यूअस नुह शिवालिक्स इज डिसकंटिन्यूअस मन रखो एटा वेरी क्लियरली हला हला ग्रेटर हिमालय नेक्स्ट मॉर्निंग the important peaks here are the important peaks here are Mount Everest. The important peaks here are Mount Everest. Kete 8850 ठीक जानतली हला माउंट एवरेस्ट केते 8850 जदि 3 वर्ष पर आउथर कोन देखियो मु लिखियो 8852 व्हाई तो थोड़ी तो टकी दोचंदी because Himalaya is increasing its height every minute बढ़ुच इंच मिली my memory बढ़ुच microns रे बढ़ुच हला काहे कि Himalayan belt is completely located on the fault zone सीबीआई बोले तो अनुच मत हां देन अगुड खबर दउछ कि नहीं सीबीआई की खबर दउछ कि मास्टर केमती पढौछि कोन अरे हुई सेमती रोड बैच थाए सब गुप्तचर लगी दे कोन करछि केमती हलुछि कोन करछि नेक्स्ट कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट पर कंचनजंगा लेखि चला कंचनजंगा जंगा देखि दियो स्पेलिंग ता हला कंचनजंगा देन मकालू धौलगिरी मक्का धौलगिरी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा देन नंदा देवी बहुत इंपोर्टेंट एबे सब तुम टेबल देकी पचार दउचंदी हला टेबल करी पचार दउचंदी को जगह रे कोटा बाबा इटी प्रति गोटे गोटे लाइन गोटे गोटे क्वेश्चंस अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू कैच दैट वन देन हाईएस्ट टॉप 10 माउंटेन पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय रियली जीबु जति जीबु जस्ट लेट हेडिंग तो कल देखि देबो नै जो हला हाईएस्ट पुनी सब हेडिंग दियो highest top 10 mountain peaks of greater Himalaya एटी देखो अरे एटा कोन आसी यार
मु आज क्वेश्चन नेबेनी काली करेबी हला काली आरंभ रु आज पढ़ न क्वेश्चन काली धरि परिबनी बिल्कुल नंबर 1 एक दुई रैंक हिसाब से लिख दियो नंबर 1 माउंट एवरेस्ट नंबर 1 माउंट एवरेस्ट एटा हला माउंट एवरेस्ट तुम माउंट एवरेस्ट देखा होनी कौन एटा 1 हला चोमुलुंगमा तुम ये देखि परिबो ताको पचांती चोमुल और आ नाटा कोन आ गुटे सागर माथा लेख केमति लिखिबो एमति स्लैश देखि ता ना चोमुलुंगमा सागर माथा हाइट पुनी लेख 8850 मीटर ठीक है पुनी स्लैश देखि इंडिया नेपाल sorry it is India Nepal goes this is China Nepal है और नेपाल तिब्बत we can say नेपाल तिब्बत भी भूल चाइना इसमें कहली माने तिब्बत है ना तिब्बत रे की जात में एती फाइटिंग चलची हु इज द मैन कौन आप इधर शॉर्टली मत स्टोरी कहले कौन दलाई लामा कौन करथिले He maintains the sovereignty of the particular land to maintain the traditional attires. है ठीक कहले very good. Dalai Lama was an religious leader, political. Dalai Lama अच्छे थे प्रथम दलाइ लामा अच्छे हुए देयर इज एन कोरोनेशन मन रख दलाइ लामा ए जो हिस्ट्रीटा हेतिला मन रख हम तुमको जस्ट कहि देउची एई सब रेंज रे मु तुम स्टोरी आकर कहि दे कोन कोन हेतिला इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहरू जवाहरलाल नेहरू हला आफ्टर योर वॉर 1965 से अराउंड दे पर्टिकुलरली दे फ्लीड थ्रू द हिमाचल प्रदेश ए रूट देखि से आस्तिले ठीक अछि particularly this is Lhasa is somehow here Lhasa is here somehow Lhasa हला सो हिमाचल प्रदेश रूट देखि से आसी कोठी कले धर्मशाला को आसिले पढे से तोड़े मिडिल हिमालय काली मु कहबी हला तो नेहरू तम कोन कले इंडियन गवर्नमेंट वाज हेल्प्ड हिम असाइलम हिसाब से नेले असाइलम को जगह रे जेमती आज भी मु कहूची देखो एटा मन रख को बडा जोड़ा वैलिड क्वेश्चन अछि जेमती तिब्बतन मोनास्ट्री देयर आर बहुत जगह रे अछि तिब्बतन मोनास्ट्री जेमती मेजर हला तमरो धर्मशाला मु जाई छी मु खाली कहबी बहुत जिंस हला सेमती मु कहबी तिब्बतन मोनास्ट्री ओडिसा रे भी अछि चिरांग इज इन बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट गंजाम चिरांग बड़े जगह कोन को जगह से मानेले गंजाम रे गजपति ठीक अछि गजपति आ गुटे अछि कोन बड़ मोनास्ट्री कोठी इंडिया रे तावांग अरुणाचल प्रदेश तावांग सबुठ को जे तावांग हला अरुणाचल प्रदेश रो सबुठ बड़ मोनास्ट्री दिस इज इन एपी अरुणाचल प्रदेश कोट से माने पळे आइले इंडिया को भुवनेश्वर भी अछंती हमर एठी गोटे नामगल सिक माने सेही जिंस बहुत बड़े जिंस अछि एठी आगर भी से माने तंगर मेडिसिन दउचंती देयर इज अ ट्रेडिशनल बेस ऑफ बहुत जगह से माने पळे आइले इंडिया को अजाइलम देले एंड पर्टिकुलर दैट इज व्हाई चाइना रो आगो सिथ पे बुझे कि नहीं तांको अजाइलम मिलला धर्मशाला ऊपर काली मु कहबी कोन से जगह रे केमती कोन हला पढ़ो इंडिया ऊपर इंडिया बहुत वास्ट हला पुन देखो कौन लिखिलो अरे सेकंड रे कंचनजंगा 8598 दिस इज कंचनजंगा मन को डाकिली peaks of greater Himalayas हला
K2 भावनी कि K2 टा कहीं से ओमिट हेगला मु ग्रेटर हिमालय कहूची K2 इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय concept clear रखो K2 is a part of trans Himalaya Kanchenjunga is a part of greater Himalaya है तो Kanchenjunga कोठी असला 80 second रे this one लेखो Kanchenjunga पुणी जेमती स्लैश देखी इंडिया नेपाल इंडिया भूटान ना नेपाल बरे हाँ इंडिया नेपाल नेपाल माने सिक्किम सिक्किम नेपाल बेट पर्टिकुलर लिखे दो सिक्किम नेपाल कहते 8598 से नेपाल 8516 थर्ड लोड से 8 आला है लोड से थर्ड लोड से इंडिया नेपाल कहते 8516 हेलो then fourth Makai same slash Nepal China Makalu Mangkokno Makalu eight four eight five सोनू कौन कहला तंग देव कहला कि स्वेटर बिकंते विंटर रे हां हां एटी हमर सब हाट पड़ेनी से आसंती अरे पड़नी आमर तो जमी ये स्वेटर यदि जो भाई पिंधती लोक टे 15 दिन शीत पड़ो जमी सतर बरफ पड़ू कि एमती पिंधिक आसन सब मुझे शीत दिन देखती ना मंकी कैप दुईटा ये झुली कान माने बर्तमान है विंटर टा केते बढ़िया दिन थिला बर्तमान पूरा पोड़ी जाउची देह माने ऊपर चम उठी जाउची पूरा माने साप काटी छाड़ला बेला बर्तमान चम छाड़ुची नहीं इंडिया टिके वर्ल्ड टिके रिलैक्स ले इंडिया बिल्कुल कम हस होची नहीं काल देखि हबनी बहुत कंसंट्रेशन दरकार नहीं कि खाली एति की पढ़ो एनसीईआरटी दियो गारंटेड क्वेश्चन पाइबो मु तुमको लिखि दोउची प्रीलिम्स रे हैला बट घर जाउतरे पढ़ो मु तुमको गारंटी दोउची संगे संग पढ़ो जाएंगी हैला विद इन 20 तोर 30% मेमोरी सेडिमेंटाइज हे जियो नॉट जे 4 दिन पढ़ो देखियो खाली सेतल को मोरी मुंह देखाओ तो की गाली तापर देखो 5 नंबर हैला सॉरी से स्पेलिंग टा से बोले चोर 5 नंबर एटा पुणी नेपाल चाइना चो यो CHO OYU चो यो 8201 मीटर तो सब बिलीव मी दे दउछन स्लाइड रे जॉइन करो कॉलम ए कॉलम बी क्वेश्चन सब 6 नंबर के धौलगिरी नेपाल 6 नंबर 8 धौलागिरी दिस इज नॉट धौली सांचू स्तूप हैला इट इज धौलागिरी 8167 नेपाल धौली सांचू स्तूप के जण जाई धौली सांचू स्तूप हाथ देखिला बाप रे खाली तो सेल्फी सेठी नहीं आइतो नहीं भल जाना मते बहुत बढ़िया लागे तो देखो तो दया नदी कम तो सुखी की पूरा माने डांग ताउट तो भला हम घर पाखरे सेपटे जगत सिंहपुर जो सुखा नदी जाई से बसी पानी भरन सेठी मो जाइत्र मोर सांग पचा तते फील होनी मुके कौन फील को ना जेमते अशोक आ ये भीतर मु कहली मते पूरा देखा होची सेही समय केमती कोन हेतला एक्चुअली तुम जानि छ तमे मु कहूची एटा खाली पब्लिकली से जो गोटे आस्तिला कर बाकी हेतला हमर गोटे पिक्चर आसनेतला अशोक ये थिला से पिक्चर रे ये करीना कपूर थिला शाहरुख खान करीना कपूर इतनी बाजे स्टोरी माने ओडिसा केवल ए जो हमर ए जो कोन सेटा ए खंडगिरी गुंफाटा सेटा देखैची तार गोटे शॉट रे आ मैक्सिमम नाही माने जोटा मेजर जिंस एटी नाही इतने माने मिसस्क्रिप्टेड ये करीना कपूर और शाहरुख खान अशोक जो होता मतलब कहीं अशोक कौन गोटे ग्रुप्स भी ता भीतर देखा देखियो से पिक्चर हिस्टोरिकल मूवी बट एटा नेते नो तुम एक्चुअली जानि छ तुमको एबे कहि दूची इट वाज नॉट द कलिंगा वॉर दैट अशोका वाज ट्रांसफॉर्म टू बिकॉज ऑफ दैट वन दिस इज समथिंग अदर थिंग्स तुम खाली कहि दूची पर निजे रिसर्च कर कहि जे बहुत लंबी हो
सेटा सत्य नुह कि हठात ना मारिकी तांको भितर एमती आसिला दया नदी पूरा रक्त होइला सब गप बुझछ कि नहीं सेमती नु माने तुम जानो ट्रूथ पिलांको बहिर पढो ठीक अछि बट ता पछरे अलग जिंस थिला मेनली मु कहबी इट इज बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ बुद्धिज्म से समय बहुत चलता तू जानी रख दिस इज फॉर योर इनफॉरमेशन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बड़ा बहुत जिन है ठीक अच्छे और से पिक्चर देखियो आ से देखला परे मु भाबिली कि सत्तरे माने जदी अशोका भी आसी देखियो कि शाहरुख खान एमती रोल करछि अशोका कहबो भगवान मते जन्म दियोनी है नेक्स्ट लेख तू पूरा घोषी पकइछ नै को पिक्चर कोठी शाहरुख खान न तू माने फैन फैन माने पंखा को पंखा देख नेक्स्ट लेख केतना गला छटा 7 नंबर मनसालू नेपाल मनसालू हम मन सालू और जहाँ भी कहबो कि सालू सालू जहाँ भी लिख मन सालू दैट इज नेपाल 8-1-6-3 मु ओडिया रे कहबो इंग्लिश कहबो दांत बिंदु देख 8163 8 नंगा पर्वत पड़ेला 80 हाँ 8 कितना है 8126 मीटर अगेन इंडिया पीओके पूरा लिख लो अबे देन ऐसा देवी अन्नपूर्णा माने अन्नपूर्णा 8091 कोटी नेपाल देन सिस पांगमा 10 रे सिस पांगमा मिलनी मते कोठी हां सिस के एंती कोची सिस पांगमा 8027 मीटर चाइना जी जहां शब्द बाहर कर पल्ला कर एटी मु गोटे जिनस कहूँ टिके रो सांगे सांगे तो ने भिड़ा भिड़ी तो दौड़ी जीवु एना बसे दियो 10 मिनिट र एटी गोटे जिनस भूली गली मु एटा नोट देखि लेख प्लस पॉइंट काली ग्रेटर हिमालय मु काली माउंटेन बेसिस करी बहुत क्वेश्चन आसी तेरु पर्टिकुलरली माउंटेन पासेस हला लेख the beauty of greater Himalaya the beauty of greater Himalaya lies in the Nepal the beauty of greater Himalaya lies in the Nepal major part of greater Himalaya runs across the major part or major span better major span and length major span or length of greater Himalaya passes through Nepal passes through Nepal the famous Pashupatinath temple the famous Pashupatinath temple क्या पे डेडिकेटेड को ठाकुर एटी हला बकेट लिखो डेडिकेट और कमा देखी डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इट्स नॉट विष्णु हला लॉर्ड विष्णु नो इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा कमा lies हला among the greater Himalayas in Kathmandu
ठीक अछि ओके आज ପାଇଁ ताले एतिक थाउ विल कंटिन्यू द माउंटेन पासेस एंड अदर थिंग्स एंड होपफुली काली हिमालयस सारी की हमें पहुंचबा ट्रायंगुलर पेनिनसुलर ऑफ इंडिया मेजर अप टू 10 डेज पर्यंत क्लास मिस करन बहुत इंपोर्टेंट इंडिया अब खाली एतिक नोट पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो मु तुम गारंटी देछि क्वेश्चन कर परियो सॉल्व करबो जो वेराइटी आस हला सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जाओ Sir, जाएंगे घर sir. किंतु पढ़ो जाएंगे आधा घंटे सर गोटे डाउट यस हेलो हां यस सर एक्चुअली आपण कहले नंगा पर्वत जांस्कर रेंज रे अछि बट ग्रेटर हिमालयस रे हमें तांको काहे की काउंट कले नंगा पर्वत को एटी कोइंसाइड होइछ एक्चुअली यदि तुम देखिबो ओके नंगा पर्वत रा नंगा पर्वत रा मु तुमको डाकिली कोठी ट्रांस हिमालय रे मु तुमको हाँ, ग्रेटर सर। कहिनी मु तुमको कहिनी सर। ग्रेटर फॉर योर इंफॉर्मेशन मु तुमको नंगा पर्वत डाकी छी की तमे एटी सर बुक ग्रेटर हिमालयस टॉप सुनो, सुनो। 10 रे आपण नंगा पर्वत को इंक्लूड कले ना पर्टिकुलरली हैला मु तुमको एथि पई कहूची एटा गोटे तार एटा गोटे तमरो मिडिल जंक्शन आसी जोटा कि जास्कर आउ ग्रेटर हिमालय पाखा पाखी हैला ओके ओके ठीक अछि सो सेई जगु सेटा कोइंसाइड करूची ता संगे ओके हैला किछि पार्ट एपटे किछि पार्ट सेपटे दीज आर ऑल फॉर व्हाट पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैला ओके ओके सर ओके ठीक Thank you, अछि थैंक यू ऑल ऑफ यू सर थैंक यू K2 को कहीं टॉप 10 है नियालानी कोटे कोटे K2 को हां केटू K2 में ग्रेटर हिमालय आसन गेट टू ट्रांस हिमालय आसी ठीक है सर हैला ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर